Assalamu alaikum. I'm Amir Arshad, teaching cultural studies and ITAE to NCC students. The purpose of this video is to let students have understanding how to prepare their assignments according to the NCC guideline. So my main focus is the formatting of the assignment. So without further delay, let's start. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So first of all, this is the requirements document. They say use standard Arial font size 11. So of course, so this is the Word document in front of you. So font size is 11. So this is the size of the font. Okay? And then the other side is the type of the font. So if I just click here, so I will select the Arial. So it means that I have selected the Arial font and the size is 11. So this is the first requirement I have just done. So it means that first requirement is done. Next one, they are saying use 1.5 line spacing. How can we do it? It is very simple. So here we are. So if I right click means there are two clicks in front of you. First of all is your first finger and the second finger. So the first finger on the mouse, the left finger on the mouse is the click finger, and the right finger, the next to the first finger on the mouse is the right click. So I will click. I will just come to bring the cursor to the document and make the right click. So it should be here. There you go. So there was a problem in my mouse, that's why. So paragraph spacing. So here index and spacing and then paragraph, right? Then I will click in the line spacing. I will click 1.5 lines and then I click OK. Okay, इस तरह हम इसको we do it. So let's say if you have already made the assignment, then how can we do it? Let's say this is the, I'm sorry, I'm just writing it like that, so because of the lack of time. So let's say आपकी assignment पहले से ही बनी हुई है. So how can we do it? We just select it. How we select it? You click. It means the left finger on the mouse. You keep pressing the click and move the cursor on the text, then the text will be selected. This is how we select the text. तो इसी तरह आप इसको सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, अगर आपका फॉन्ट मेक श्योर करना है तो इसको आप एरियल कर दें, उसका फॉन्ट साइज 11 कर दें. अगर इसकी लाइन स्पेसिंग मेक श्योर करनी है, अगर पहले से असाइनमेंट बनी हुई है, देन हाउ कैन वी डू इट? वी जस्ट राइट क्लिक ऑन द text and then here we are paragraph and then 1.5 lines. If it is not, then just click 1.5 lines and click OK. So this is the only case if you have already made the assignment. If you haven't made the assignment yet, so then you can select this default setting before starting the assignment. Just to let you know, the assignment I am working on in front of you, the document I am working on, so I will share with you. So it is the settings will be done already, which I will share with you. Anyways, moving on to the next requirement. So this is done. Next one is have a 2.5 centimeter margin on the left side of the page and a 2 centimeter margin on the right hand side. What are margins? Margins are the space. This is the space on the left side and this is the space on the right side. I've seen some students assignments, what they have done. So they have write the assignment in the middle of the document. So you just need to make sure. So जब भी आप कोई असाइनमेंट बनाएं, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाएं, तो अगर आपने ऑलरेडी बना लिया हुआ है तो सिलेक्ट करके यहाँ से आपने मीन्स होम वाले टैब में आपने होना है and then you select it here. Normally some students have done it here. I have seen some assignments before, like not in NCC, maybe somewhere else. So the standard format is align left. This is it is showing you. So this is the standard format of making the assignment. Coming back to the margins. What are the margins? So how can we set it? We go to page layout. So this is the page layout tab. I will click on it and I will click on the margins and then I will click on the custom margins. And here you need to ignore the top and bottom. Okay, so we are focusing on the left margin and the right margin.
आपने कोई और सेटिंग को नहीं छेड़ना. We just focus on the left margin and the right margin. So we need 2.5 centimeter margin on the left hand side. So here it is already 2.5. अगर ये 2.54 होगा तो आपने क्या करना है, इसको आप ये देखिए बॉक्सेस को आप प्रेस करेंगे तो नंबर्स आपके इंक्रीज भी हो रहे हैं, डिक्रीज भी हो रहे हैं. If you click the like the first button, then it will increase. If you click the bottom button, then it will decrease. So you make sure, so 2.5 on the left side of the margin. So this is the left. And they are saying, and a 2 centimeter margin on the right hand side. So it means on the right side, so I need the 2 centimeter margin. This is how can I set it? So this is done, and then click OK. Again, if you have already made the assignment, you click all the text in your assignment and apply the same setting which I have just explained to you. Next is include page numbers. How can we include the page numbers? Very simple. Insert. If I click on Insert tab, then it should be here somewhere. Let me see. So page numbers are insert here. बिकॉज आपका डॉक्यूमेंट ज़्यादा कंजस्टेड था, इस वजह से वो शो नहीं था कर रहा. सो इंसर्ट वाले टैब में आप आएंगे और पेज नंबर पे क्लिक करेंगे. आपको कहाँ पे चाहिए? द स्टैंडर्ड वी डू इट एट द बॉटम ऑफ द पेज. व्हेन यू होवर योर कर्सर, जब अपना कर्सर इस बटन पे लेके आएंगे तो इस चीज़ का मतलब ये कि आगे फर्दर ऑप्शन है, तो आपको डिफरेंट ऑप्शन दे रहा है कि आपको कहाँ पे चाहिए. सो दिस इज हाउ यू विल सेट इट अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ द टीचर. So let's say I need this one. So this is how you can decide the page number on the document. Set the page number on the document. So moving back to the previous settings. Yes, we are back again. Now include page numbers. The next one is headings. Now headings are very important in an assignment. So let's say, so they are saying they have divided the headings into 3 level of headings. First level heading, then second level heading, and the third level heading, and this is what they have done it. So now how we can decide what is the first level and second level and third level. Let's say I need a home in Pakistan. So my first heading is Pakistan. Second is where I need home in Pakistan. So this is the subheading of Pakistan. It means level 2 heading. So this is level 1 heading, means main heading. Level 1 heading, main heading, and ये आपकी level 1 heading हो गई. नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड पे, level 2 heading, level 2 heading. then पंजाब में मुझे कहाँ पे चाहिए? Let's say I need a home in Lahore. So this is level 3 heading. This is a sub heading ऑफ. ज़रूरी नहीं है कि आपकी तीनों हेडिंग्स हो एक टॉपिक की. पाकिस्तान के अंदर उसकी सब हेडिंग होगी पंजाब, पंजाब की सब हेडिंग हो गई लाहौर. सो दिस इज हाउ वी डिवाइड द हेडिंग्स. अब यहाँ पे उसने कहा 16 साइज होना चाहिए लेवल 1 हेडिंग का. तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से कर दूँगा ये फॉन्ट साइज 16 कर दूँगा, और इसको बोल्ड करना है. आपने मेक श्योर करना है एरियल हो और बोल्ड हो. एरियल सेलेक्ट कर लेना है और बोल्ड पे क्लिक कर देना है. अगेन लेवल 2 हेडिंग ये आपकी होनी चाहिए 14 size. So I will go to the 14 and then bold it. And then the third one is 12 size. So I'll click on it and then 12. So this is the level 3 heading and I will make it bold. So this is the next requirement of the assignment, how to manage the headings. अगर आपकी ज़रूरी नहीं है कि आप ये तीनों लेवल की हेडिंग्स यूज़ हो, आपकी एक मेन हेडिंग भी यूज़ हो सकती है. So it is not compulsory, it depends upon the topic you are working. So this is the statement, so you can attach it. It is very easy. The first page is the title page. So title page is very important. It means title page का मतलब ये है कि उस पर सिर्फ और सिर्फ आपने क्या लिखना है, सिर्फ अपना नेम लिखना है, NCC एजुकेशन ID नंबर लिखना है, एंड द नेम ऑफ द सेंटर मीन्स TMUC आपने लिख देना है, TMUC गुजरांवाला. The next page is the table of contents. अब table of contents सबसे पहले आपकी आएगी statement of confirmation, फिर उसके बाद आएगा title page, फिर उसके बाद आएगी आपकी table of contents. I have spoken to the students and they already know how to make the table of contents. So as far as headings are concerned, so let me show you. So what are these?
आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स में ये आपकी हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 2 है और ये हेडिंग 3 है, जस्ट लेटिंग यू नो. Now the next requirement is of course start each task on a new page. So this is already discussed. So आपने हर टास्क को नए पेज से शुरू करना है, चाहे आपका कहीं पे भी हो जाए, और then you have to include the question. So whatever the question is, you also have to include the question or on the top of the page. It means below the task. So the next one is ensure any diagram, screenshots, power slides are correctly on the page and a reference. Okay, so how you can insert the image in Microsoft Word? It is very easy. It is not very difficult. Screenshot means, so I can take a screenshot of this. Let's say screen. I can take the screenshots. इसके different तरीके हैं. आप चाहे इसको different तरीकों से कर ले. Let's say I can click on Alt plus print screen. ठीक है, उससे Alt plus print screen करूँगा तो फिर मैं उसको पेज में जाके मैं उसे पेस्ट कर सकता हूँ. इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी इमेजेस अगर आपने इंसर्ट करने हो तो मैं कैसे करूँगा, इंसर्ट पे आऊँगा and then I can insert the images here. Again, it is not showing me the complete, so here I have complete Word document. अब यहाँ पे for example मेरे पास अगर कोई image पड़ा हुआ है, let me show you. Let's say आपका image है, this is the image I want to insert. So this is the image I have inserted. अब इसको आप एडजस्टमेंट भी इसकी कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, आपने इमेज को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट यहाँ से सिलेक्ट हुआ हुआ है, क्रॉप भी से छोटा भी कर सकते हैं. अगर आप इसे कट करना है तो उसे भी आप कट कर सकते हैं. लेट्स से आई नीड दिस वन, मुझे ये चीज़ बस ये जो जहाँ से ये ब्लैक है मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ लाइक दैट. ठीक है, तो अब मुझे ये चाहिए, फिर क्रॉप को करूँगा तो ये क्रॉप हो जाएगा. ठीक है, आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, फिर क्लिक हेयर, बिग एंड स्मॉल भी हो सकता है. दिस हाउ यू कैन डू इट, right? The next one is of course checking spelling, grammar and punctuation. This is you, I'm sure you normally do it. The next main part, so checking, you should proofread. आपको प्रूफ रीड करना है. वर्ड लिमिट आपको मेक श्योर करनी है. वर्ड लिमिट कहाँ से आप देख सकते हैं, ऑफ कोर्स वर्ड लिमिट अगर आप देखना चाहते हैं, सो यू कैन come to the bottom of the Microsoft Word document here. If you follow my cursor, this is how you can see the words. ठीक है, अगर आपने इसकी समझ नहीं आ रही डॉक्यूमेंट में आपके कितने सारे वर्ड्स हैं तो आप इसको आप सिलेक्ट करके भी काउंट कर सकते हैं. लाइक अगर आपका एक टास्क जो है वो पेज 1 और पेज 2 पे आ रहा है, तो पेज 1 और पेज 2 का टेक्स्ट कम्प्लीटली सिलेक्ट करते हैं. जैसे मैंने आपको सिलेक्ट करने का तरीका बताया, यहाँ पे उसकी वर्ड काउंट आ जाएगी, तो आपको मेक श्योर हो जाएगा कि कितने वर्ड काउंट है. अगर ये आपको शो नहीं हो रहा तो बस आपने क्या करना है, यहाँ पे इस बॉटम पे आकर राइट क्लिक करना है. राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको शो हो जाएगा. देखिए, अगर आपको देखें, इसको मैं ऑफ करता हूँ तो वर्ड काउंट चला जाता है, ऑन करता हूँ तो वर्ड काउंट शो हो जाता है. दिस इज हाउ वी कैन डू द वर्ड काउंट. अब ऑफ कोर्स यू ऑलरेडी नो हाउ टू प्रिपेयर द Harvard referencing. I have also revised this in class and I'm sure you already know that. The next one is of course submit the diet. So Microsoft Word 2003, so make sure करें आप Microsoft Word use करें और कोई और आप सॉफ्टवेयर ना यूज करें. Name should take the form. This is very important. Name should take the form student number, student name and module title. यानी कि आपने जो डॉक्यूमेंट सेंड करना है, डॉक्यूमेंट लेट्स से कि आपने ये वाला डॉक्यूमेंट अगर आप ईमेल कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, आपको लेट्स से मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, मैं सेव करूँगा. लेट्स से आई वांट टू select on computer desktop. So this is how you can name the file. How you can name the file, of course student number, आपका student number आएगा, student number, then underscore, you need student name and then the module title. Cultural studies है, cultural studies. This is how you save the file in your laptop or computer. This is I will suggest, and this is you can share in the same format to Ma'am Fatma or teacher for the review. So because through this way it is very easy to identify the student assignment or work.
So again, now if I click on save, this is, let me show you where it is saved. There you go. So it is saved like that. अगर आपका ये आपने पहले इस नाम ऐसे फॉर्मेट में सेव नहीं किया हुआ तो इसको राइट क्लिक करें और रीनेम करें, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं लाइक दैट। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी डू इट। बाकी ये वाला डॉक्यूमेंट जो भी मैंने बनाया है ये मैं अभी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। एनी क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो। So that's it from me today. Take care. Okay, Allah Hafiz.